राइट। ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले क्लास में आपको रिलेटिव लोअरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के विषय में बताया था और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस किया था कि वो क्या है और व्हाई इट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी एंड व्हाट आर द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कॉलिगेटिव, व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने आपको एक्सप्लेन किया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग हम किसको कहते हैं ये भी मैंने बताया था, लोअरिंग किसको कहते हैं ये भी बताया था और हमने आपको एक फार्मूला कैलकुलेट करके दिया था PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA नॉट इंटू XB। और यहाँ पर इसको हमने लिखा था NB बट NA एंड प्लस NB। और चूंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट टू इस फार्मूले में हमने मॉडिफाई किया था NB दैट इज NA। तो हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना था तो WB बाई MB हुआ था और यहाँ पर क्या होगा WA बाई MA होंगे। तो हमने इसको MB कैलकुलेट किया था MB, तो MB बराबर हो जाएगा WB इंटू MA और नीचे में होगा WA और यहाँ होगा PA नॉट माइनस PA और डिवाइडेड बाई PA। ये कब था PA नॉट, ये कब था जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन था। और एक दूसरा मॉडिफाइड फार्मूला दिया था फॉर एनी टाइप सॉल्यूशन, फॉर एनी टाइप, जहां आपको कंफ्यूजन है कि कब हम नेग्लेक्ट करें कब नेग्लेक्ट नहीं करें, उसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको दिया था। वो फार्मूला आया था PA नॉट माइनस PA डिवाइडेड बाई PA इज इक्वल टू दिस इज NB बाई WB NA। और इसमें सारे चीज को बैठा देंगे उसी तरह से हमारा निकल आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फार्मूला में सिर्फ वही चीज आएगा MA और यहाँ पर आ जाएगा WA और यहाँ पे होंगे PA नॉट माइनस PA और नीचे होगा दिस इज PA। इतना ही चेंज है। अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बाद यदि आप हिसाब बना पाते हैं तो आप समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो हमें हिसाब ऑलवेज अटेम्प्ट करना है और हिसाब के बगैर आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। इस सवाल को मैंने लिखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 850 बार। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट weighing 5 ग्राम is added in 39 ग्राम of benzene, right? तो यहाँ पर लेट हमने क्या दिया, बेंजीन को मान लिया, लेट बेंजीन A मान लिया, क्योंकि सॉल्वेंट को हमने ये माना है तो दिस इज ये। तो इसका WA हमको पता है कितना ग्राम है 75 ग्राम बटा है। पहले हमको पहला डाटा लिखते हैं, पहला काम स्टेप होता है कि डाटा लिखना, राइट द डाटा फ्रॉम द क्वेश्चन। पहला काम है डाटा लिखना। दूसरा क्या चीज है, अब दूसरा डाटा देखिए, इसका मॉलिक्यूलर मास भी आपको पता है, दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। अब कहता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट कितना ग्राम है, ये WA is 39 gram, weighing 5 gram is added to 39 gram of benzene, sorry this is 39 and the WB कितना है, that is 0.5 gram, 0.5 gram। अब यहाँ पर पढ़िए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम PA माने हैं, ये सॉल्यूशन है। अब PA नोट क्या है, प्योर कंपोनेंट है, ये कितना है 0.845 बार है, 845 बार है। ये सॉल्यूशन हो गया PA दैट इज फॉर सॉल्यूशन। जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था PA दैट इज PA नॉट इनटू XA, सो इट इज ओनली फॉर सॉल्यूशन बिकॉज़ द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, राइट। ये कितना है 0.854 बार है, कितना दिया हुआ है। नाउ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, व्हाट
व्हाट डज इट मीन? दैट इज कंपोनेंट ए का भी वेपर प्रेशर हमको दिया हुआ है। तो कितना है ये? दैट इज 0.8541। आप देखिए कि चूंकि वेपर प्रेशर घटता है तो जब सॉल्यूशन बना है तो फ्रॉम दिस डाटा इट इज वेरी क्लियर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज बिकॉज इट इज 0.850 bar and it comes to be 0.845 bar. The vapor pressure of the solution will decreases from the data, it is clear. So then write formula. The third step is formula. Now what is the amount is here 0.5. This is very less amount, so it is a dilute solution. So for dilute solution by using this formula concept, this MB is equal to, this is WB into MA and this is equal to WA into PA naught minus PA and divided by PA naught. You see, now this is the formula. These are from the question we have written the data. Step 3, 4. Step 4 is, write the data in the formula. डेटा को हम क्या लिखें? फार्मूला में लिख दें, राइट? इस फार्मूला में बैठा दें। WB is known, WA is also known, MA is also known, PA naught is also known, PA is also known, and on solution the must write the unit. Step 5, write unit. यूनिट क्या होगा ये आपको लिखना है। जब इन सारी बातों को हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, यूनिट लिखेंगे तो वी विल गेट द फुल मार्क्स। अब हम लोग सीबीएसई सिस्टम में क्या होता है कि हर एक का स्टेप डाटा लिखना है, फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने में हाफ मार्क्स मिलता है। तो वी थिंक ओवर इट कि हम डाटा लिखें, फार्मूला लिखें, बिकॉज मार्क्स इज इन आवर पॉकेट। नाउ देन इस फार्मूला में इस डाटा को पुट अप कर देंगे। अगेन देयर इज ए मार्क्स इन स्टेप मार्किंग, वो मार्क्स मिलता है। आप सॉल्व कर ले, सॉल्यूशन लिखें, बट यू मस्ट कॉन्फाइंड ऑन स्टेप 5 यूनिट इज मस्ट, सो इट्स यूनिट इज ग्राम। आप ग्राम में कैलकुलेट करके लिख देंगे। तो आई होप दैट कि you will get the full marks if such type of problem is asked. Now you will put the same value by using that formula, not neglecting for any type I have. You check it whether the marks calculated by using the neglecting part and not neglecting, the result will remain the same or not. Is it clear? So I want to proceed in the another topic, and that is the another colligative properties. Another colligative properties. So when you work the theory part, simultaneously you solve the numerical related on that. That clears your idea, because physical chemistry simply based on the numerical part, right? So the another colligative property, that is elevation in boiling point. Elevation in boiling point. What is? Simply we know the boiling point. हम लोग 6th क्लास से पढ़ते आते हैं boiling point क्या होता है। उसको हम लोग बोलते हैं the temperature at which liquid boil। लेकिन आपका जैसे जैसे स्टैंडर्ड बढ़ता है, आप सारे यूज करते हैं। 6th क्लास में आप जो चीज़ आपका पहनते हैं, जैसे जैसे लाइफ में आप आगे जाते हैं आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। उसी तरह से पढ़ाई का एक दायरा होता है। कहीं हम डेफिनेशन नीचे स्तर पर उसको मान लेते हैं, आगे जब चलते हैं उस डेफिनेशन में भी उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। तो पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द एट विच इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक pressure. Boiling point is the temperature at which vapor pressure, the short लिखा है, boiling point is the temperature at which its vapor pressure
its vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure. This is the derivation. This is the boiling point of a liquid. We can define it. Now, what is elevation in boiling point? Elevation in boiling point, right? So the elevation of boiling point in boiling point can be defined by a diagram. So let it be drawn here. So it is here. This is the temperature axis. This is the vapor pressure axis. So boiling point is the temperature at which vapor pressure becomes equal to vapor pressure of the liquid or the solution becomes equal to the atmospheric pressure. Now here this is the atmospheric pressure. Now this is atmospheric pressure. One atmospheric pressure. Now for there are figure, just I draw it. This is AB. This AB curve for solvent, और किसके लिए solvent, and CD for solution. This is solvent, right? You see in this curve, what you will see, the vapor pressure of the solution is always lower than the vapor pressure of the solvent. Is it clear? So by that diagram, it is clear the vapor pressure of the solution is always lower than that of the vapor pressure of the solvent, as explained by the above figure in the previous discussion. So now this solvent, this is it. Now it will at point X, suppose it is point X. Now the vapor pressure of this solvent becomes equal to the atmospheric pressure, and this will taken as the boiling point of the pure liquid TB naught. This is boiling point of pure liquid or solvent. This is curve CD for solution. See, if we consider from this intersecting line at this point, it is far below from the atmospheric pressure. So this point cannot be the boiling point of the solution. What does it mean? When we put the solute, and which is non-volatile, in a solvent, it constitutes a solution. This whole is called the solution. So its vapor pressure decreases because some of the surface area is occupied by the non-volatile solute molecules. So this figure clearly shows that at any temperature, the vapor pressure of the solution, this is designated by curve CD, is always lower. So due to decrease in vapor pressure of the solution must be heated at a higher temperature. The temperature must be elevated. That's why the word used here is elevation. So due to the decrease in vapor pressure, the solution must be heated at a higher temperature, so that at its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure, and this is TB. And this TB is called the boiling point of solution. This TB is called the boiling point of the solution. This TB is called the boiling point in the solution. When it on heating, it reaches at point Y, and at point Y, the vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure, then the solution boil. Now there is a elevation in the rise in the temperature, or elevation in the temperature. So this is called delta TB. This delta TB is represented as elevation in boiling point. Elevation in boiling point. And this elevation in boiling point, delta TB, is equal to the boiling point of the solution minus
the boiling point of the solvent. All specification are given. This is so. This is very important factor. This is so. Our aim to define here the elevation in boiling point. We don't like to write the definition directly without the concept. So first you have the concept. If you have the concept, you can formulate the definition yourself. So there is a need of the concept. So you see here again, this AB is the curve of the solvent. This CD is the curve of the solution. Now what temperature is defined as, the boiling point is defined as the temperature. The boiling point is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. So for this pure liquid at point X, the vapor pressure of this pure liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Liquid tends to boil and it will be the boiling point represented by TV naught. So the specification you note it, TV naught anywhere, it is the boiling point of the pure liquid or the solvent. Now the solution have much lower vapor pressure, so that the solution must be heated at a higher temperature. So its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. This situation arises at point Y, and at point Y, the vapor pressure of the solution becomes equal to the atmospheric pressure, so that it is called the elevation in boiling point, delta T. So elevation in boiling point, now we are able to define it very easily. How we will define elevation in boiling point is the difference in boiling point of the solution and that of the solvent. So elevation in boiling point can easily be defined Tb minus Tb naught. This is the elevation in boiling point. It is the difference in boiling point of solution and the solvent. Very easily we can define it, right? This is the elevation in boiling point, right? So this elevation in boiling point is from this diagram, it is very clear. This is delta Tb. Now elevation in boiling point, the cause of elevation in boiling point, we forget it. Now cause, what is the cause? The cause of elevation in boiling point is due to the decrease in vapor pressure of solution. This is very simple. Now elevation in boiling point, another content, it is a colligative property. It is a colligative property. Colligative property. Property, right? आपको एग्जाम्पल में दिया गया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब आपको पूछ दे रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. एक्सपेरिमेंटली वी राइट कंक्लूसिवली, experimentally it has been deduced delta Tb is directly proportional to m, where m is molality. Right? Molality depends upon the number of moles of the solute. As it depends upon the number of moles of the solute irrespective of its nature, that's why it can be said that it is a colligative property. Right? It is clear because the elevation in boiling point depends upon the molality. Molality depends upon the number of moles of the solute, hence it is a colligative properties. Right? Now expanding this one, this delta Tb is equal to m into Kb. This proportionality constant, this Kb is called, what is Kb here? This Kb is called molal elevation constant. Molar elevation constant, or called ebullioscopic constant. ebullioscopic, ebullioscopic constant. Now if m is equal to 1, then delta Tb comes to be Kb. So we are in a position to define the
that is molar elevation constant very easily by that mathematical relation. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कैसे आया? जब हमने मोलालिटी को क्या माना? 1 मान लिया। तो कहेंगे जब किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाए तो उस समय मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डेल्टा टीवी के बराबर होगा, इसी को हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे। दिस इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन। सो molar elevation constant can be defined now as, so I think that this what is the boiling point, what is the elevation in boiling point, what is the cause of the elevation in boiling point is due to the decrease in vapor pressure. It is a colligative property. Delta Tv directly depends upon m. M is the molality. Molality depends upon number of moles of solute. Hence, it is a colligative property. Right? Now let we see. Now what is the Kb? Kb का definition हमें जानना है कि what is Kb? Kb क्या है? So this molar elevation constant is equal to molar elevation constant is equal to elevation in boiling point when molality becomes equal to unity, becomes equal to 1, that is unity. So we are easily define the molar elevation constant or the eubiotic constant. The value of Kb comes to be mr Tb naught square delta H vaporization into 1000. This is not need to derive this equation, simply for your knowledge, and its units are Kb. During the problem, Kb is very important factor. Kelvin, kilogram per mole. The value is given in the whatever the numerical value. This is the unit part. It is given in the question paper. Don't worry for that. But Kelvin, kilogram per mole. This is the unit of the molar elevation constant. Now, why we use why we get knowledge, what is the idea to introduce the elevation in boiling point? Now here, to determine the molecular mass of a non-volatile solute. जैसे हमने relative lowering in vapor pressure से क्या हमने determine किया था, molecular mass of non-volatile solute को determine किया था, उसी तरह इस elevation in boiling point से हम molecular mass of non-volatile solute determine करेंगे. Is it clear? So our another topic is determination of molecular mass of non-volatile solute by elevation in boiling point, delta Tb. This is in short form. Simply like that, we erase all the things completely. So now let's consider known mass of solute. Known mass of solute. Like that in the previous topic, solute. Let W be dissolve in known mass of solvent. Known mass of solvent WA gram. Molecular mass of solute. Molecular mass of solute is equal to mv. Right? Molecular mass of solute is equal to mv. We know. You write very clearly. Delta Tv is equal to m into Kb, where m is what? That is molality. And the expression of molality
mathematical form, you remember number of moles per kg of solvent, weight by molecular weight, this is moles, and mass of solvent if in kg, WA in kilogram. Now if in converted, WB into 1000, and this one is in, this is MB into WA, and here is in gram. So this, so we put the value of expression molality here. This is WB, this is MB, and this is WA in gram, and this is kb 1000, and this is kb. And kb, I had told you the value of kb will be given in the question paper. Not need to remember any value. So from that we are able to calculate the molecular mass. So that WB into 1000 into kb, this one, and this is delta TB. Delta TB, and there is WA. This is in gram. This is unit is given. So by knowing the value of the weight of the solute, because we consider the known mass of the solute, its molecular mass here, molecular mass MB we have to find out. Consider the solute. Consider the solute. Yes, known mass is given, molecular mass. So delta TB if known, WB is known, WA is known, KB is given. Putting all the value, we are able to calculate the molecular mass of the solute. So types of problem here. Types of problem based on that problem. So पहला molecular mass calculation, another second problem delta TB elevation in boiling point calculation, and the delta TB is equal to this is TB naught, TB minus TB naught. So calculation of TB naught is equal to TB minus delta TB in Kelvin temperature, and this TB is equal to what is delta TB plus TB naught. So these are the types of the numerical asked in the examination. And if we have the theoretical concept and we know all the terms, so again I write the term WB, this is mass of solute, WA, mass of solvent, mass of solvent, mass of solvent, mass of solvent, mass of solvent. This is WB, WA, mass of solvent, and TB, delta TB, elevation in boiling point, elevation in boiling point, is that it? Elevation in boiling point, KB, this is molar institution constant given. So if we know all the terms and the expression is known, we are able to calculate the molecular mass of the non-volatile solute, we are able to calculate the elevation in boiling point, we are able to calculate the that is the boiling point of the pure solvent, and we are able to calculate the boiling point of the solution. Okay. Keeping in mind that unit should be must. Here the unit is in Kelvin scale, Kelvin is where? Kelvin scale. If it is asked to write the value in the centigrade scale, then you will use the concept 0.73, not exact value is 1.5, 20 degrees Celsius is equal to the Kelvin. This is the conversion table, we can easily be convert it. So another colligative property, now you want to start. आपको थ्योरी मैंने बताया था, इस पर एक न्यूमेरिकल डाला, ये न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है पेज नंबर 40 एनसीईआरटी बुक में. इसमें कहता है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का दिया हुआ है C6H12O6. कभी मॉलिक्यूलर मास दिया रहता है, कभी आपको अपने कैलकुलेट करना पड़ेगा. इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन ए पॉट. एट व्हाट टेम्परेचर द वाटर बॉईल एट इतना बार, राइट. तो अब आपको पहला काम क्या है, डाटा लिखना है. डाटा क्या लिखना है, WB क्या है, ठीक है. एट व्हाट टेम्परेचर आपको कह रहा है, at what temperature the water boil, this one.
18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो सॉल्यूट क्या है? ग्लूकोज है। सॉल्यूट क्या लिखेंगे हम? ग्लूकोज है। ग्लूकोज, और ग्लूकोज का हम लोग वेट कितना दिया हुआ है? 18 ग्राम है। इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हाउ वी सॉल्व द मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम ये गिवन फार्मूला। नाउ डब्ल्यू दिया हुआ है कितना ग्राम? 1 केजी दिया हुआ है। यदि आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप ले लो, 1000 ग्राम हो जाएगा। देन केवी दिया हुआ है। केवी का वैल्यू कितना है? 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दिया, राइट। अब आपको क्या करना कहता है? ऐड वाटर, यानी यदि ये वाटर है और इस वाटर में आपने ग्लूकोज को डाला, तो ग्लूकोज को डाला तो ये क्या बना? सॉल्यूशन बना। समझिए बात को, यहाँ समझना है। सॉल्यूशन बना, और जब सॉल्यूशन बना तो उस सॉल्यूशन का हमको क्या कहता है? टेम्परेचर निकालना है। तो यानी हमको क्या निकालना है? टीवी फाइंड आउट करना है। ये हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वरना हम नहीं कर सकते। अब टीवी करने के लिए पहले हमको डेल्टा टीवी फाइंड आउट करना होगा। चूंकि आपको यहाँ दिया गया है टीवी बराबर डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट, तो अब हम लोग इस फार्मूला को यूज कर दें। डेल्टा टीवी बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 इंटू के बी। हमने ये ग्राम में लिया है इसीलिए ग्राम यहाँ कन्वर्ट कर। तो डब्ल्यू बी आपका डाटा पुट कर दीजिए, सारा लिखा हुआ 18 है। यहाँ कितना होगा? 180 होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 1000 होगा। और यहाँ भी 1000 आप डालेंगे तो ये कट ही जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू आप 0.52 डालेंगे। तो ये यूनिट जब सॉल्व करेंगे तो ये केल्विन में आएगा। Whatever this is your problem to solve at your home, right? अब देखिए इसमें अब हमको निकालना है टीवी। तो आपके सामने फार्मूला मैंने दिया था, दिस टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। तो यहाँ पर टीवी हमें निकालना है, तो ये क्या होगा? डेल्टा टीवी प्लस टीवी नॉट, राइट। अब ये जितना केल्विन आया, अब यहाँ टीवी नॉट क्या है ये जानना होगा। टीवी नॉट आपको बताया गया था, ये डायग्राम था यदि मेरा ऐसा, तो ये सॉल्वेंट का था और ये सॉल्यूशन था, ये टीवी था। तो यहाँ टीवी लिखा हुआ है आपको प्रीवियस में कि इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये प्योर सॉल्वेंट है और इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन का कर्व है और ये सॉल्वेंट का कर्व है, राइट। तो हमको क्या निकालना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का क्या होगा? वाटर में डाला है, तो इसमें हम जितना निकलेगा उसमें हम डाल देंगे, दैट इज 373। ये डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इतना केल्विन आंसर आ जाएगा। वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सिमिलरली बाय यूजिंग दैट फार्मूला वी आर एबल टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर, दैट इज any non-volatile solid, right? So by using that concept, now we consider the another colligative properties. So another colligative property, that is the third one, that is the third one, colligative properties. Third one, colligative properties. This is the colligative properties. This is depression in freezing point. So simply depression in freezing point. Depression in freezing point क्या है? Freezing point is the temperature. It is the temperature. It is the temperature at which two phases exist in equilibrium having same vapor pressure. This is same vapor pressure. This is the definition. Now depression in freezing. Depression का मतलब होता है जैसे simply the person is in depression means किसी प्रॉब्लम के कारण या वो अपने मानसिक स्थिति में उसमें गिरावट आती है, that is depression, right?
तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम क्या है? नाउ डिप्रेशन इन freezing point that can be explained by a diagram. Simply if you take the diagram, this is the diagram axis for temperature, this is the vapor pressure axis, and this is the curve for the solvent. You see, this is solvent, this is here the this solvent is converted into the frozen solid, frozen solid इसमें convert हो गया. This is solvent. So this is the at this point. This is the point. So what will that? This is the point at which the two phases. This is the liquid, and the liquid changes into the that is the solid. Suppose we take some water in the ice tray and put in the freezer. And for some hours, not for long hour. If we take it out, then we see the some water changes into the ice and some liquids are there. So this is called the frozen solid and this is called the solvent. So this is the temperature axis. Temperature. This is XY. So this is called Tf naught. This is Tf naught is the temperature at which the two phases exist in equilibrium, that is the liquid and the frozen solid. This is now the another when we put the solution solute in it, when put the solute in it, solvent, solute non-volatile, put in it, so its vapor pressure decreases. Vapor pressure decreases. As its vapor pressure decreases, it means that the solution will tend to freeze at lower temperature. So this is the curve for the solution. So it will freezes at this point. This is so this is called Tf, and from here to here this is called delta Tf, right? Delta Tf. So this delta Tf is called the depression in freezing point, and this delta Tf is equal to Tf naught minus Tf. Tf naught minus Tf, because the freezing point of the pure solvent will be more, and when it will solute is added into that solvent, its vapor pressure decreases. Consequently, the solution will tend to freeze at the lower temperature, so it will comes downward. So it will freeze at this point. We may write this point A, B, C, D like that. So this it will freeze again. It will convert it into the frozen solid. This is frozen solid from here. Here this solution and the frozen solid will exist, and here the vapor pressure will remain the same. So freezing point is the temperature at which the two phases exist in equilibrium, that is solvent and the frozen solid solution, and changes into the frozen solid. So this one. So the depression in freezing point is now defined as it is the difference in freezing point of the solvent and that of solution. Depression in freezing point is the difference in freezing point of solvent and solution, right? Now, it is said what is the cause of the depression in freezing point? Again, the decrease in vapor pressure. The decrease in vapor pressure. Decrease in vapor pressure. This is the decrease in vapor pressure. This is the decrease in vapor pressure. Now, how it is a colligative property? Colligative property. How it can be? Experimentally, it has been observed. Observed. Delta Tf directly proportional to m. M is the molality.
molality. Or molality will depends upon the number of moles of the solute, right? So it is a colligative property. So delta TF is directly proportional to M. M is the molality. Molality depends upon the molar concentration. We don't write it molar, it will be wrong. It will be the molar concentration. So it is a colligative property. Depends upon molality. Molality depends upon molar concentration. Depends upon molar concentration. Hence it is a colligative property. Hence, ये colligative property. We can write it very easily. Now delta TB is equal delta TF is equal to M into KF. This KF is called molar depression constant. Molar depression constant or cryoscopic constant. Cryoscopic constant. This is called the cryoscopic constant. So if M बराबर 1, then delta TF is equal to KF. So we are able to now define what? We are able to now define the KF. Define KF. Right? KF क्या है? This is molar depression constant. Is the depression is equal to the depression in freezing point is equal to depression in freezing point when molality becomes equal to 1. This is the definition. From that mathematical expression we can easily define it, right? So KF value is, for your knowledge, mRT naught square delta H fusion into 1000. This is Kelvin kilogram per mole. This one Kelvin kilogram per mole. Now, what is the application? Why we read depression in freezing point in colligative property? So the application of depression in freezing point, let me see. Application of depression. It is application. Determination of molecular mass. Determination of molecular mass of solute. Similarly, like that determination in boiling point. Consider a known mass of solute. Let solute WB gram, molecular mass, molar mass WMB gram. Then we take dissolve in a solvent, mass of solvent बराबर WA gram. Then formula, write delta TF is equal to M into KF. M is WB, then MB, then WA. This is molality term. This is 1000 into KF, right? So by putting all the values, WB, what is WB? Mass of the solute. ये आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा. MB वो मॉलिक्यूल कौन मॉलिक्यूल है वो आपको कैलकुलेट कर लेंगे.
कितने ग्राम सॉल्वेंट में दिया हुआ है वो आपको दिया रहेगा। तो ये सारे, और KF इज गिवन, KF दिया हुआ रहेगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। पुटिंग ऑल द वैल्यूज वी आर एबल टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास और एबल टू कैलकुलेट द डेल्टा TF। सो दिस इज द प्रॉब्लम आस्क्ड इनटू दैट। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है, ये आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट, तभी हिसाब बनेगा आपसे सॉल्यूट। MD क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ क्या है? सॉल्वेंट है, राइट। KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। प्रॉब्लम इसमें क्या क्या आएंगे? प्रॉब्लम आपको आएगा कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए वाला टाइप का। दूसरा रहेगा डेल्टा TF कैलकुलेट करिए, दूसरे टाइप का। और तीसरा प्रॉब्लम रहेगा कि TF नॉट कैसे निकालेंगे, ये निकालिए। चौथा प्रॉब्लम रहेगा कि TF क्या होगा, ये निकालना है। अब डेल्टा TF आपको पता है कि ये बराबर होता है TF नॉट माइनस TF। यू डोंट कंफ्यूज दिस रिलेशन। सो TF यदि हमको निकालना है तो ये क्या होगा? TF नॉट माइनस डेल्टा TB। और यदि हमको TF नॉट कैलकुलेट करना है तो क्या होगा? डेल्टा TF प्लस TF। सो दिस इज ऑल अबाउट the depression in freezing point. So let it to be finished. पहले आपने समझा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, मैं पुनः इसको बता दे रहा हूँ। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर at which the two phases exist in equilibrium having the same vapor pressure. What is the that is the depression in freezing point? That can be explained with the help of the following diagram. At the depression in freezing point, finally we say it is the difference in freezing point of the solvent and that of the solution. What is the cause of the depression in freezing point? Because of the decrease in vapor pressure. As we put the solute non-volatile in a solvent, its vapor pressure decreases. That's why the solution will tend to freeze at lower temperature. So this is the cause of the depression at the freezing point. Now depression in freezing point is a qualitative property because experimentally it has been observed delta TF is equal directly proportional to M. M is depends upon the this is molality. Molality depends upon number of moles of solute and qualitative properties also depend upon the number of moles of the solute irrespective of their nature. That's why it is a qualitative property. Now this KF, this is molar depression constant, is defined as it is equal to the depression in freezing point when the molality becomes equal to M. Now calculation of molecular mass with the help of depression in freezing point. It is calculated on the basis by this formula, and there are so many problems. You try at your home. I hope that you get an idea about the elevation in boiling point, about the depression in freezing point, and what is the KF, what is the KB, what is the, this is the so many terms in that, and you solve the problems as I discussed in this content in your given in your book. यदि ये सारे ऑनलाइन क्लासेस आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड। थैंक यू, थैंक्स।